Good morning, everyone. Any questions on what we discussed? Hello. Yes, sir. Hi, good morning. Yeah. I have a question. Like in real practical financial books, what is LT debt equity? What is LT in debt equity ratio? LT? It is written as LT ratio. Long-term debt equity ratio. You only take debt which. Okay. Because in all statements I found it was LT. Yeah, LT is long because you might have two types of. As per some of the accounting standards, you are required to make that clarify whether you're long-term or short-term. Anything else? Anything else? Okay. In case no questions, we'll start with return ratios. And primarily, we have three types of return ratios: return on equity, ROE, then return on asset, ROA, and return on capital employed, ROCE. So the ROE, ये definitions देख लीजिए एक बार. It tells percentage in return which you earn for the equity investments. So, for example, if this comes out to be 10%, which means if you've invested 100 rupees in equity, the company generates a net return of 10 rupees for equity shareholders. ROE, preference dividends, if any, are excluded. So what is ROE? In terms of formula, it's PAT divided by equity capital. But in real world, this is not PAT upon equity capital. This is PAT minus preference dividend divided by equity. So ROE, more practical formula is PAT minus preference dividend and then divided by equity.
So the logic remains same, because preference dividend, if you're paying any dividend to preference shareholders, that is paid out of the profit, which is PAT. So hence, if you're paying any dividend to the preference shareholders, that is not a return for equity shareholders, because वो तो उनको मिलेगा नहीं, because that's being distributed or will be distributed to the preference shareholders. Hence, while calculating ROE, we're only interested in that portion of the profit or that portion of the PAT which equity shareholders will get, and hence we are subtracting preference of that. Any doubt? Equity share capital. Equity share capital includes everything for the equity. So it's is not only capital, it includes equity capital. So effectively it means net worth. Okay? Which will have your retained earnings as well. Any doubt in ROE यहाँ पे? सर ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा शेयर होल्डर्स को। रिपीट करोगे क्वेश्चन? आपका आवाज में क्लियर नहीं आता। मैं कह रहा हूँ सर ये वाला रेशियो जो है ये खाली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि जितना ओन फंड्स हम लोग मतलब इन्वेस्ट करेंगे उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है शेयर होल्डर्स को। Yeah. So, for example, if this comes out to be less than 10%, so what does this mean? If you are a shareholder, this tells you that if you invest 100 rupees on an average next year or on an average per year, the company is generating 10 rupees for you on every 100 rupees. Okay. If you invest 100, the return for every 100 is 10 rupees. Percentage can be deferred or it will be 10%. Sorry? Percentage can be deferred. Like Can it be is a deferred 10%. मतलब इसमें जैसे 10% ही खाली दे रहा है 100 रुपए में, जैसे मैं बताया कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ज्यादा भी हो सकता है। ये तो आप एक एग्जांपल दे रहे हो ना। ऑफ कोर्स कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि हर कंपनी का ROE 10 ही होगा। ओके। Whatever the number, be it 10, be it 20, be it 5, what that number would mean वो बता रहा हूँ मैं। Any other doubt on ROE? Okay. Now, इसका जो फॉरेंसिक है मैं 2 पॉइंट में कराऊंगा, जो 2 पॉइंट में आएंगे। ठीक है। Now, if I look at ROCE,
वैसे आरओसी के डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। Now when you say capital employed means debt plus equity. ठीक है, सो अगर डिनोमिनेटर में मैं डेट प्लस इक्विटी ले रहा हूं, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा हूं मैं, ठीक है। सो व्हेन यू सी कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स कि डेट प्लस इक्विटी है, व्हिच मीन्स मुझे न्यूमरेटर में वो प्रॉफिट लेना होगा जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, इसलिए आरओसी में ईबीआईटी लेते हैं, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, any doubt on ROCE? It's important that you understand the difference between ROE and ROCE. So the difference starts from the denominator. In denominator you have debt as well, and hence because you have a debt, there's an adjustment in the numerator in the form of EBIT. Any question in this? So this EBIT is this formula is what is given in your slides, but practically हम थोड़ा इसको tweak करके use करते हैं. जैसे EBIT into 1 minus T करते हैं. This is the formula that we use. EBIT into 1 minus T divided by capital employed. Because EBIT में से जो टैक्स पोर्शन है वो ना डेट होल्डर्स को मिलेगा ना शेयर होल्डर्स को मिलेगा, सो उसको माइनस कर दिया. So ROCE is EBIT into 1 minus T divided by capital employed. हाँ जी, any doubt? ROC or ROE? Okay. So in case no, so now if I come to the forensic part of this, so I'll go to DuPont. Now what is DuPont? DuPont is हमने क्या किया, ROE is equal to what? PAT divided by equity. यही है ना ROE, PAT divided by equity. एज्यूम करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, so ROE is nothing but PAT upon equity. Now
So if it's PAT upon equity, so this PAT upon equity can be written like this, which is PAT, net income is nothing but PAT divided by sales into sales divided by total assets into total assets by equity. And why? Because if I cancel this, so suppose if I cancel sales with sales, if I cancel assets with assets, the leftover क्या बचेगा? PAT divided by equity, which is nothing but ROE. So is everybody clear in terms of how ROE can be written into the breakup of these three, which is this 1, 2, 3. So ROE can be broken down into 1 into 2 into 3. So ROE from a forensic perspective is analyzed as net profit margin ratio into asset turnover ratio into financial leverage. We'll pause here with doubt है तो पूछिए इसमें. इस breakup में doubt before we go to the analysis of this. Any questions on this? What is financial leverage and why we are bifurcating this formula into three parts? The purpose of DuPont. Purpose is अभी आपको समझाऊंगा जो हम forensic analysis करेंगे उसके लिए इसको breakup कर रहे हैं. So give it a minute. Probably you will see the use or purpose of this. Your first question, what do you mean by financial leverage, is nothing but debt upon equity. Debt upon equity हमने ऐसे भी किया था कि this is one version, दूसरा version is debt upon debt plus equity. ये भी एक किया था हमने. But I told you the Yes. same. ठीक है. अब assets जो होता है आपका assets is nothing but debt plus equity. जो आपके बैलेंस शीट में एसेट्स होता है उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? अगर आपके पास कोई भी एसेट है वो या तो आपका पैसे से आएगा या आपने लोन लिया होगा. सो एसेट बी इक्वल टू डेट प्लस. तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स करके लिखा हुआ. एसेट अपॉन इक्विटी व्हिच इज नथिंग बट डेट प्लस इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी. ये यहाँ पे. Okay. सो फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहता है?
financial leverage is trying to tell you, suppose if you have 100 rupees asset in the numerator and in the denominator you have 60 rupees as equity, so it's 100 by 60. So what does it tell you? It tells you as a company has purchased an asset of value rupees 100, out of which 60 is funded through equity, hence remaining which is 40 has been funded through debt, और debt को financial leverage बोलते हैं. So this ratio tells you कि company ने कितना debt लिया हुआ है, जो हम debt equity ratio के through भी देख सकते हैं, which is same thing what is being represented here. Parul, is this clear? Yes, I'm getting it. Now coming to what's the purpose of this, we'll do the forensic analysis of this. So let me clean this up. Yeah. So मेरा जो ROE है, that is PAT divided by equity. Now अभी ROE का if ROE goes down, is this good or bad for the company? Bad, sir. So ROE नीचे क्यों जा सकता है? इसके दो रीजन हो सकते हैं, प्राइमरी दो रीजन हो सकते हैं. First, your PAT goes down. ठीक है, with no significant change in equity. The second reason could be your PAT remains almost where it is and your equity goes up. Yes or no? And third could be combination of these two. ठीक है कि दोनों भी हो जाए एक साथ, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बिकॉज 1 and 2 मैंने अगर आपको समझा दिया तो आप 1 and 2 का तो कॉम्बिनेशन वो ऑटोमेटिकली implied. यहाँ तक कोई डाउट्स? Are we clear with this? Which means the ROE, if ROE goes down, it's not a good sign for the company because you're making less return for your shareholders. And decrease in ROE could be primarily because of two reasons. One, your PAT is going down, and second is because your equity is going up. Any questions or doubt on this? हाँ जी. ठीक है. Now देखिए, so if your PAT goes down, so what will happen? In this ratio, in the first ratio, this is 1, this is 2, this is 3. So if your PAT goes down in the first ratio, your numerator will go down. Enough. Guys. Yes, sir. Yes. And when your numerator goes down, your sales, everything remains same. There's no change in any of the variables. बाकी जो sales है, assets है या equity, उनमें किसी में change नहीं आएगा.
You with me? Can you repeat this one? So if your PAT goes down, and we're discussing the first reason, that decrease in ROE is because of decrease in PAT. If ROE goes down and the reason is decrease in PAT, तो मेरा first ratio में, sorry, मेरी first formula में PAT and net income नीचे जाएगा. So net income will go down, but there will be no change in any of the other variables like sales, assets, and equity. So in this first scenario, we are what we're discussing, that if other variables remain same, but the PAT goes down, that is the case that we're discussing. There is no change in sales, there is no change in assets, there is no change in equity, but still your PAT goes down, and hence your ROE goes down. If that happens, what does this mean? This means company की पहले, let's assume 2019 और 2020, कंपनी की पहले सेल्स 100 थी, अभी भी सेल्स 100 है, बट कंपनी का पहले पैट 60 रुपीज था, अब कंपनी का पैट 40 हो गया. दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर डिस्कसिंग. द सेल्स रिमेन सेम बट पैट गोज डाउन. Guys, is this clear? Yes, First sir. situation. If this happens, what does this mean? अगर सेल्स सम है, पैट नीचे चला गया, तो हमने डिस्कस किया था नेट प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस में. इसका रीजन क्या होगा? सम कॉस्ट वुड हैव गॉन अप. वो कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं. तो अगर आपने अटेंड नहीं किया तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस का जो मैंने फॉरेंसिक कराया था, उसका एक बार सेशन देख लेना. ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? If you come back to the first scenario, which means if ROE goes down, and ROE is going down because of decrease in PAT, if it is going down because of decrease in PAT, and if it start with decrease in PAT, this means your net income is going down, but your sales and assets and equity is not changing. So this means your ROE is going down because your cost is going up. There's a problem that you're not able to manage your cost, and hence your ROE going down, which means you will be able to identify, जैसे हमने net profit margin analysis में identify किया था, same analysis यहाँ पे लगाना है, and you will be able to find out the reason why ROE is going down. So ROE is going down because of increase in cost, and कौन सी cost है वो भी हम identify कर पाएंगे, जैसे मैंने NPM analysis में सिखाया था. So any doubt on the first reason, which is decrease in PAT, before I go to the second one? Any questions? Okay. Case 2. Suppose if we take scenario 2, so let me change the color. So if we take the second scenario, which is if decrease in ROE is on account of increase in equity. Okay. So what will happen if there's an increase in equity? What will happen? This equity will go up in this side. Formula 3. Because we're referring to increase in equity, correct?
So equity will go up. If equity goes up, definitely your total assets will go up. And if your total asset goes up in the Formula 3, it means definitely it will go up in Formula 2 as well. So any doubt in this? So we're discussing the second reason now, increase in equity. So if your asset goes up and it does not result in I'm sorry, I joined late. Prior to this, what was closed? I'm not saying that to repeat it. This is the due point is the first we have started for this today. So we have discussed ROE, ROC. We have completed return ratios, ROE and ROC. Okay. And now we are doing the last part of which is due point. So yeah. So if you're discussing the second reason now, which is increase in equity. So अगर मैं equity को increase करता हूँ, तो मेरा assets increase हो जाएगा. और assets अगर third formula में increase हो रहा है, तो second formula में भी increase हो जाएगा. यहाँ तक any doubt till this point before I move further? No, sir. If there is increase in asset, but there is no increase in sales, hence यहाँ पे sales flat रहेगी, hence profit flat रहेगा. What does this mean? This means problem यहाँ पर है. Which means आपने equity को increase कर दिया है, आपने नया plant and machine, so you've raised more funds, and उस more funds से आपने अपने नया plant and machinery लगा दिया, but वो plant and machinery से sales तो increase ही नहीं हो रहा. Because your sales is not going up, your profit is not going up, but your denominator has gone up. So which means in ROE में numerator में कोई change नहीं है, but denominator increase हो गया है, क्योंकि आपने ज़्यादा equity डाल दिया. Hence your ROE is going down. Hence the problem is this ratio. What does that mean? You're not utilizing your assets correctly. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट, जैसे हमने एसेट टर्नओवर रेशियो में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है. सो अगर दोबारा डिटेल में करना है सो देख लेना वो. बट जस्ट टू समराइज दिस, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, आपने नया जो प्लांट एंड मशीनरी लगाया है, या तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे टू प्रोड्यूस गुड्स. दैट कुड बी द वन रीजन. वो आपको कैसे पता लगता है? इन्वेंट्री देख के. अगर इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि आपने नई प्लांट एंड मशीन लगा दिया तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही. सो इट मींस आपके प्रोडक्शन में इश्यू है. नाउ लेट्स सी इफ द प्रोडक्शन has gone up, which means your inventory has gone up, but your sales is not going up, which means the production is not a problem, the sales is a problem, which means the sales team is not able to sell more products in the market. So ये दो रीजन होते हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हो. Any doubt on the second reason, which is increase in ROE? ये दो रीजन होते हैं इसकी वजह से आपका ROE नीचे जाता है. फर्स्ट इज डिक्रीज इन PAT and second is increase in equity. Any questions in this? Okay. So Increase in equity hmm. can be through that you're not the market is not familiar to invest more, and the equity can be increased. नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ. Equity, what this content of equity is? Everything. Your net fund. Asset minus liability. Fund. Yeah, shareholders fund. It's asset minus liability. What the equation we have?
Yeah. been told. The Yeah. equity includes the shareholders' capital, but plus the retained earning and all that part. Yeah. If it is increasing Hmm. and you are not paying the dividend to the shareholder, then also the equity will increase. Correct. So if you have profits in last year and you have not paid dividends to the shareholders, so your those profits will become retained earnings and will get added to the equity. Hence, this year equity will go up. Correct now. Okay. Okay. Yes. Means by that, how we are generating this statement of that there is a problem in we are not utilizing that asset. I was not. So आपने dividend declare नहीं किया. Okay. Why you have not declared dividend? Because you told your shareholders, you told your board that we need this fund for the expansion in the next year, and that's the reason you don't declare dividend. Correct. Okay. Till this point. Now you have retained those profit because you mentioned that you want to expand. So what you did, you expand, which means आपने वो पैसा खर्च किया, एक नई production facility setup कर दी. You're with me on this? Yes. जिसकी वजह से total asset increase हो गए. ये देखो, assets को भी ऊपर चला गया. With me on this? Yes. Now the next point is, अगर asset Formula 3 में increase हो रहे हैं तो Formula 2 में भी asset increase हो जाएंगे. ठीक है. We are analyzing means trend or how we are analyzing this aspect. Year on year means what is the big. We're trying to find out the reason or the root cause because of which my ROE is going down. If a company compared to the last year or the previous 3 years. Everything, whatever time period you want to compare. If you're doing this analysis for 2 years, if you're doing analysis for 10 years, how does it make a difference? The data will remain same for that period, correct? You give me 10-year data, I will do the analysis for 10 years. You want me to do analysis for 1 year, I will do the analysis for 1 year. Means you can say that in 2 years it cannot be. Are we saying that the project which is under completion will also be an asset to you? So let's assume we are looking at a time period of 5 years. 5 years. That's ROE is just going down. Right? So ROE is going down, and management is worried, and management has come to you. Can you help us to analyze and find out why our ROE is going down? And this is the analysis that you're doing. If we are investing in our production capacity, which is not ready for production, then the total asset will not increase surely. क्यों? Because अगर मैंने अगर वो पैसा एक production facility में invest कर दिया, let's assume I've invested 1 crore rupees in purchase of new plant and machinery. So the moment I purchase, it gets recorded in my balance sheet, correct, as an asset. But for example, you're not buying a facility, you're establishing a new setup, the whole new setup in that, in which you're buying some asset work and some work is in progress and all that. So what that's वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि asset की जो definition, what I've been taught is that asset which gives something output. No. Economic output. No, that's wrong. No, that's I want to clear that fundamental of mine. No, that's wrong. Asset means what you own. Full stop. Okay. The moment I own anything, that becomes my asset. Whether it will give me economic benefit or whether it will not give an economic benefit, that's a second point that I will analyze. But if I own something, let me give an example to this. So let's assume if you have a car, yes, and you own this car. Okay. Suppose you purchase a brand new car and you own that car. The car is registered in your name, and let's assume there's no bank loan on that car, which means it's not funded by anybody. You have paid entire money for that car, and now it's not under debt. So you own that. Let's assume the price of the value of the car is 10 lakh rupees. You purchased today by paying 10 lakh rupees to the Maruti
authorized dealer, and you've purchased through the check payment, so कोई black money involved नहीं है इसमें. So let's not bring those complications into this. So the moment you purchase the car and it is being registered in your name, are you the owner of the car, Deepak? Yes, yes. Is this your asset? Yes. Let's assume आपके पास already 20 cars और ये कार आपको जरूरत नहीं है, आपने ऐसी खरीद ली. Will still it be an asset for you because you own this? Yeah, means Sorry? yes. है ना? ठीक है. Yes. Now case two लेते हैं. Let's assume वो कार के 10 साल हो गए और let's assume आप, I don't know this is which batch, Delhi, Mumbai or whatever. So let's assume if this is a Delhi batch. So Delhi में I'm just reframing that. You have paid advance 10 lakh rupees and you will get the delivery after 3 months. मैं वो सिनेरियो भी डिस्कस नहीं कर रहा. We'll come to that. नहीं हाँ मीन्स ठीक है. मैं आता हूँ उस पे क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन थी एसेट की, वो एडवांस की बात नहीं कर रही थी, वो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रही थी. सो इफ यू वांट मी टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एडवांस, जो आपने सेकंड एग्जांपल है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा. बट आई थिंक द गैप इन द अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग डिफरेंट. तो पहले मैं वो प्लग करता हूँ, देन आई विल कम टू दिस एज वेल. सो let's continue with the same example. अभी दिल्ली में एक कार की जो लाइफ है वो 10 years है. उसके बाद वो कार जो है यूजलेस हो जाती है. यू कांट रन दैट कार ऑन द रोड्स. ठीक है. Yes. So let's assume that agar if you're not from Delhi, so let's assume that so Delhi government says you can't run the car after 10 years. If the life of the car is 10 years, after that it's useless for you. Okay, you can't legally run that car on the road. So let's assume अब आपके पास एक कार थी जो आपने 10 साल पहले खरीदी थी और अब उस कार के 10 साल पूरे हो चुके हैं. ठीक है. आपके लिए वो गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है. उस गाड़ी की कंडीशन खराब है, इंजन सब खराब है, बेकार है सब कुछ. ठीक है. अब वो कार आपके पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है. ठीक है. नाउ इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज वो जो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है वो आपकी स्पेस कंज्यूम कर रही है और वो पार्किंग जो लॉट में खड़ी है आप उसका रेंट पे करते हैं मंथली. लेट्स अज्यूम दैट. ठीक है. अब उस कार की रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, दीपक? Mine. Okay. Is that car give you economic benefit or disadvantage? For this example, it's giving a disadvantage. I'll But come with that. Is this your asset or not? It's now asset. It is asset also. Correct. So this is what I wanted to plug in terms of gap of understanding. Now I'm coming up with an industrial example. आ रहा हूँ इसको तो सही. नहीं मेरा point ये है कि okay please. रुको. So now what does this mean? This means this car is called as an asset because you own this, correct? Whether you get a benefit of this or not, that is to assess the financial or economic feasibility of that investment or an asset. But जो accounting calc, and this is what I wanted to bring in difference, जो आप industrial example लोगे उसमें भी यही point आएगा कि from an accounting perspective, I will classify and record that item as an asset as long as I continue to own that asset. ठीक है. अब वो जो मैंने परचेज करी है या जो मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन है या मैं जो उसका लीगल ओनरशिप रखता हूँ वो मेरे लिए अच्छे रिटर्न्स दे रही है कि नहीं दे रही is what we look at as the economic benefit. अगर मुझे अच्छे economic benefit दे रही है तो yes it's good asset for me. But अगर वो मुझे अच्छे रिटर्न नहीं दे रही है तो it's not a good asset for me, but it still continues to be called an asset for me. यहाँ पे कोई डाउट बिफोर वी टेक द इंडस्ट्री का एग्जांपल? एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? No. ठीक है. नाउ कम टू योर एग्जांपल. अब जो एग्जांपल आपको एडवांस या जो भी लेना हम बताओ. We'll replicate this understanding in that as well. Yeah. For example, you bought a machinery and it has two components. One you have received, second you will receive for which you have paid the advance, and when both will assemble, then it can produce something productive.
Now, in this, which one is you have already received, you are owning that asset. The second one, you have paid advance, but you have not received it. So advance paid will be a sort of it will be a sort of current asset. करंट और फिक्स से बाद में आते हैं, पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पे आता है. इज द एडवांस पेमेंट एन एसेट फॉर यू और नॉट? इफ यू पेड एन एडवांस एंड यू हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट, is that an asset for you? Yes or no? Yes. But you're still not receiving any economic benefit from this, correct? But it continues to be an asset for you because why? Because you own that advance payment legally. हाँ ना? Yes. Which means मुझे किसी भी आइटम को एसेट बनाने के लिए what is the criteria? Is the criteria is economic benefit or the criteria is ownership? Ownership. So समझ आ गया कि क्या गैप था अंडरस्टैंडिंग में या क्या गड़बड़ था? अब मैं करंट ऑफ फिक्सेस में भी आता. ओके, ठीक है. नाउ अभी ये एडवांस पेमेंट करंट एसेट है फिक्स एसेट, वो डिपेंड करता है. लेट्स अज्यूम if this is like a big massive construction like a big component which will take couple of years, once you pay advance payment, जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपोनेंट का, वो 2-3 साल में आपको बना के वो कंपोनेंट देता है. तो यानी मैंने जो एडवांस पेमेंट करी है, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव मी बेनिफिट इन दैट 1 year, और the product or the component of that machine will not going to come in. So मेरा फिक्स एसेट है, करेक्ट? वो 2 साल के 3 साल के बाद आने वाला. तो लेट्स अज्यूम अगर वो बोलता है कि अगले मंथ दे देगा, तो मेरा करंट एसेट है. इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन हो रहा है वो करंट और फिक्स नहीं हो रहा, टोटल एसेट है. So it does not make a difference whether you call it a current or fixed because it will still fall in a category of an asset. now if okay, we can discuss in the later topics when we do for accounting brush up and all. But अगर हमारा just one small question, if it is not in the balance sheet, it says that you are not able to adjust that advance in a year, do we have to restate those assets or what? बट ऐसा होगा नहीं ना. अगर मैंने एडवांस पेमेंट करी है तो वो हमेशा मेरे बैलेंस शीट में आएगी. हाँ, ठीक है. अगर मेरे बैलेंस शीट में वो आएगी, बीट करंट और बीट फिक्स्ड, वो आएगी मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, राइट साइड पे, करेक्ट? यू विद मी? अगर मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी तो इस फॉर्मूले में टोटल एसेट वो काउंट हो जाएगी. नहीं, it's okay for total asset which is okay, it will come. So just let me try and understand your doubt. See, is your doubt is definition of the asset, because you said asset is what gives me economic benefit? Is that which I am trying to clarify? That's okay now. What I'm trying to clarify is that asset is not what it gives you economic benefit. The asset is what you own. So is that portion clear? Yes. मैं वही क्लेरिफाई कर रहा हूँ. अभी और क्या डाउट है? अभी एडवांस वाला डाउट है. Resetting of these assets. Resetting means, so let's continue this example. आपने एडवांस पेमेंट किया एक मैन्युफैक्चरर को, उसने कहा कि मैं आपको 3 महीने में वो कंपोनेंट दे दूंगा. तो आपने क्या किया? आपने अपनी बैलेंस शीट में कैश जो आइटम थी, कैश या बैंक को माइनस किया और उसको निकाल के एडवांस पेमेंट में डाल दिया. तो यानी विच मींस बैलेंस शीट में टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंपोनेंट का ब्रेकअप में चेंज हो जाएगा. तो बैंक से पैसा निकाल के आपने एक अलग कैटेगरी डाल दी, एट प्रीपेड एडवांस पेमेंट टू द सेलर और एडवांस पेमेंट टू दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है? Yes. Now, अब आप बताओ, रीस्टेटमेंट से आप क्या करना चाहते हो? व्हाट शुड आई डू? शुड आई कैंसिल द ऑर्डर? क्या करना चाहते हो? नहीं, एक साल में ये सेइंग दैट एक साल में वो सेटल होना चाहिए कैश एडवांस पेमेंट. व्हाट यू गिवन इट टू द वेंडर. मैंने बोला कि दोनों सिनेरियोस पॉसिबल है. तो लेट्स टेक फर्स्ट सिनेरियो, उसने कहा 3 महीने में मैं मशीन दे दूंगा. थर्ड महीने में उसने कहा मैं मशीन नहीं दे सकता, मैं आपको एडवांस वापस दे रहा हूँ.
मुझे एडवांस वापस देगा, मैं जो एडवांस दिया था वो नॉक ऑफ करके उस पेमेंट को कैश बैंक अकाउंट में वापस ले जाऊंगा। ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा एडवांस। ठीक है तक। ठीक है, केस 2। अब उसने कहा कि मैं आपको 2 साल के बाद कंपोनेंट दूंगा। तो 2 साल तक मैंने आज अगर पेमेंट करी है तो 2 साल तक तो मैं वो एडवांस पेमेंट एसेट में दिखाता रहूंगा। एसेट। अब उस एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर वो आके मुझे बोलता है कि मैं आपको मशीन नहीं दे नहीं, सकता। आई एम सेइंग अबाउट करंट और is it mandatory to ascertain that any asset which has a which has to be liquidated within a 1 year's time will be a current asset about? ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो यस, इंडियन अकाउंटिंग But if it स्टैंडर्ड। is going beyond 1 year, then we have to restate this asset as a अगर वो 1 what? ईयर से ज्यादा है तो रीस्टेट क्या, वो मैं करंट एसेट क्लासिफाई नहीं करूंगा ना, मैं उसको फिक्स एसेट क्लासिफाई करूंगा एट द बिगिनिंग ओनली। तो रीइंस्टेटमेंट का डिस्कशन ही नहीं आएगा ना। सेकंड एग्जांपल मैंने दिया। For example, 6 months में बोला, now he's saying now it will take another 1 year. हाँ, Due to अगर वैसा है तो मैं some technical issues and all that. हाँ, अगर वैसा है तो मैं उसको करंट एसेट की कैटेगरी से निकाल के फिक्स एसेट में ले जाऊंगा। बट इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट बिकॉज ना मेरा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा ना मेरे No, बैलेंस शीट के साइज में impact आएगा। the only the changes in the class of asset. Yeah. Earlier it was current, now it is fixed. हाँ, अगर वैसा वो रीजन देता है और वो बोलता है कि पहले उसने 6 मंथ का प्रॉमिस किया था, वो 2 साल का प्रॉमिस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कैटेगरी चेंज हो जाएगा। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम पहले उसने 2 साल का प्रॉमिस किया था, वो बोलता है सर मैं आपको 3 महीने में दे दूंगा, तो मैं फिक्स से करंट में लेके आऊंगा। सो दैट्स ओके। बैंकिंग में तो बहुत कॉमन है यार, ये बैंकिंग में तो बहुत कॉमन है। मैंने आपको लोन दिया, आपने मुझे प्रॉमिस किया कि निशांत मैं आपको 3 महीने पेमेंट कर दूंगा, तो मैंने आपको करंट एसेट में दिखाया कि दिस पेमेंट विल कम बैक। 3rd महीने में गया तो आप मुझे पेमेंट ही नहीं दे रहे, आपने अगले साल दूंगा। तो आई हैव टू मेक दोस एडजस्टमेंट, जिसको एनपीए प्रोविजनिंग बोलते हैं, वो सब थोड़ा अलग से है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ये तो पॉसिबल है, ये अलाउड है, ये होता है। बट यू नीड टू हैव evidence to prove that. It can't be कि आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर रहे हैं। So which means you need to have some document or record to show कि पहले उसने 3 महीने बोला था, अब वो आपको 3 महीने से 2 साल बोल रहा है। And this is the reason why you're making this classification, जिससे आप नोट्स जो अकाउंट में वो रेफरेंस कर सको। ठीक है, Okay. और क्या डाउट है सर? I don't know ठीक है, any further doubts. anybody else any other doubt in this? सर इन दिस सेकंड सिचुएशन आई हैव अंडरस्टूड कि अगर इक्विटी मतलब अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे हम पैसे ज्यादा लगा रहे हैं बट हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही, तो हम लोग सेल्स टीम से बात करेंगे कि सेल्स नहीं हो रहा है। बट सर जो आपने फर्स्ट सिचुएशन बताई थी कि हमारा नेट इनकम डाउन हो रही है और सेल हमारी कांस्टेंट है, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे उस पर? तो उसमें भी बताया ना कि वो सेल्स अगर कांस्टेंट है और प्रॉफिट नीचे जा रहा है, तो क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कि कॉस्ट ऊपर जा रही है। क्योंकि सेल्स ओके, अच्छा कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ठीक का है प्रॉफिट होता है। अगर सेल ठीक है सेम सर, है, ठीक है। प्रॉफिट नीचे जा रहा है, पिछले साल 100 रुपए पे आप 60 रुपए कमा रहे थे, इस साल 100 रुपए पे 40 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या क्या खर्चा बढ़ गया है वो चेक करना पड़ेगा। वो खर्चा है, अगले अगर टैक्स बढ़ गया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और लेट्स अज्यूम आपने कोई फालतू का खर्चा कर दिया कंपनी इसके पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट में। अरे आपने कंपनी की पैकिंग में खर्चा बढ़ा दिया, बट वो पैकिंग से सेल्स नहीं बढ़ी, तो उस पैकिंग का कोई फायदा नहीं है ना। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन में एनालिसिस कराया था वही एनालिसिस दोबारा होगा कि आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है एंड इज दैट इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रेटेजिक। व्हेन आई से स्ट्रेटेजिक मींस कभी कभी होता है कि कंपनी जब पैकिंग चेंज करती है तो वो इमीडिएटली सेल्स का इंपैक्ट नहीं आता, उसका सेल्स का इंपैक्ट नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में आता है। सो दोस आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंक्रीज इन कॉस्ट। बट लेट्स अज्यूम अगर 2-3 साल के बाद भी कंपनी को दिख रहा है पैकिंग में खर्चा बढ़ा दिया, उसके बाद भी सेल्स ऊपर नहीं जा रहा, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग विद एक्सपेंसिव पैकिंग ना। तो सर इस सिचुएशन में फिर क्या करेगा, मतलब पैकिंग की मतलब फिर वो चेंज करेगा? गलत है ना वो, तो कंपनी को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, कंपनी को वापस आना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है।
ओके Any doubt in DuPont? So this is the advantage. I think Parul या किस कोई तो पूछ रहा था कि ये breakup क्यों किया. So the answer to that question is this: this breakup helps you identify कि ROE में जो decrease आता है या ROE में जो problem आती है वो problem किस segment की वजह से आ रही है, वो problem किस reason की वजह से आ रही है. So yeah, so that you are able to exactly identify what is the root cause of decrease in ROE. And once you're able to identify the root cause, then of course you can take the corrective actions जो मैंने आपको बताया. So that's the purpose of doing DuPont analysis, which is nothing but breaking up ROE into three components. Raji, any doubt? You guys last time, any questions in DuPont analysis? Okay, I take that as closed. So हमने ROE कर लिया, ROCE कर लिया, DuPont कर लिया. So सिर्फ only one big बचा ROA. Again, to me, this is not useful ratio, but still, from a theoretical purpose, कर लीजिए. Now, ROE is, I use this version, which is EBIT into 1 minus tax upon average total assets. Okay. So, ये same ratio मैंने अभी आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो. So, डिनोमिनेटर मेरे टोटल एसेट्स है, एवरेज टोटल एसेट्स है, ATA लिख रहा हूँ उसको. ठीक है. और न्यूमरेटर में मेरा EBIT इंटू 1 माइनस टी है. EBIT 1 माइनस टी का सिंपल सा मतलब है उसमें से टैक्स हटा दिया. ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? अगर आपके 100 रुपीज एक्सेल में चल, so let's assume if this comes out to be 50 divided by, let's assume 100. What does this mean? आपने on an average 100 रुपीज इन्वेस्ट किया एसेट्स में, and average investment of 100 rupee generates EBIT a level of 50 rupees. So यानी ये 1/2 हो गया. So शॉर्ट में बात ये है कि 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे in asset you generate EBIT of 1 rupee. That's your efficiency of utilization of your assets, or that's your earning capacity of your assets. So that's what ROA is. As I said, it's not too useful. ये सेम चीज मैं ROC से निकाल सकता हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाई. अगर आप ध्यान से देखेंगे ROC का एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला था. ठीक है. So but hence I don't see too much of value from this formula. But ठीक है.
फ्रॉम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एक लास्ट फॉर्मूला ये बचा है, सो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस एज वेल। अब ये देख लीजिए ये वाला, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। हाँ, ये स्लाइड भी आप देख लीजिए। जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स एंड लेट मी नो कोई डाउट है तो। हेलो सर, इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है EBIT ABIT डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, तो वो फिर कैसे पॉसिबल होगा जब EBIT 1 - 1 - T हो गया तो? डिफरेंट वर्जन्स दे रखे हैं आपको, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स में डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे। तो वन वर्जन इज कि आप टैक्स को माइनस मत करो, विदाउट टैक्स को माइनस करे देखो न्यूमरेटर में। तो थर्ड वर्जन इज आप टैक्स को माइनस करके देखो। वो जो आपने बताया 50 डिवाइडेड बाय 100, वो जो वो एग्जांपल थोड़ा देखा ना, तो वो उस 50 में वो हम एक्सक्लूडेड टैक्स कर माइनस चुके हुआ हैं। टैक्स माइनस हुआ हाँ, EBIT टैक्स इंटू माइनस। 1 माइनस टी है वो। हाँ, तो वो ये इसमें एक्सक्लूडेड है ना टैक्स, इस 50 में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट इन आर ए? Are you good with this? Why we are doing the average of total assets? सेम लॉजिक जो हमने पहले डिस्कस किया था। डिनोमिनेटर जो है बैलेंस शीट आइटम है विच इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जो न्यूमरेटर है वो P&L से आया है। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एवरेज करा जाता है। जैसे हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो में किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में किया था, जितने भी आपने रेशियोज के हमने सब में डिनोमिनेटर में एवरेज किया, वही लॉजिक। याद है वो लॉजिक, शुड आई रिपीट दैट? नहीं, I recollected. हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, सो दिस मीन्स जो हमारे दो कंपोनेंट्स बचते हैं, सो रिटर्न रेशियोज बचे थे हमारे, वो खत्म हो गए। ठीक है, और 2 पॉइंट बचा था, ये डन विद 2 पॉइंट। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक सेक्शन है जो वैल्यूएशन रेशियोज है, जो मैंने बोला था कि मैं लेवल 2 में जब वैल्यूएशन होगा तब हम करेंगे। उसके अलावा फ्रॉम माय साइड रेशियोज अनलेस यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Questions for ratios? Yes, Subhash. मुझे एक ना छोटी सी सजेशन चाहिए, तो हेल्प चाहिए थी आपकी।
बाज आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट से आवाज है? हाँ बोलो। हेलो, मैं पूछ रहा बोलो। था कि जो टोटल हमारा कोर्स है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अभी तो हमारा लेवल 1 कंप्लीट नहीं हुआ, ये 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है क्या? कितना 2 या 3 महीने लग जाएंगे? यार ये पता नहीं ये सब क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड यस्टरडे, ठीक है। बिकॉज अगर आप I think I have told myself, I have made myself very clear in the earlier sessions as well कि जो अभी तक रिक्वेस्ट थी, अभी तक वो रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे को पुराना भी कराओ, बिकॉज वो केपीएमजी के सेशंस डिस्कस यस्टरडे कि वो दोबारा सब रिपीट होगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये कितनी जल्दी खत्म होगा, सो then it brings back to the same point जो हम डिस्कस कर रहे हैं। that's exactly what Damni told me. It should not happen that आप दोनों साइड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। So what I mean by that is कि आप बोलो कि हमारे को पुराना भी कराओ, ठीक है, डिटेल में भी कराओ, then and at the same time we are saying कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, खत्म करो। So I'm really confused to be very honest now, क्योंकि and this is exactly what Damni told me कि she has spoken to you as a batch, and because Subhash, let's be honest, correct, अगर आप चाहते हो कि जो आपके सारे अकाउंटिंग टॉपिक्स हो चुके हैं वो अगर रिपीट करने हैं, so can we turn around this in a space of 2 months? Let's try and be realistic around this. जो रेशियोज है, रेशियोज आइडली नहीं कराना चाहिए था। आइडली का मेरा मतलब है कि एक बार हो गया, करेक्ट, अब उसके आगे कराना चाहिए था। अगर मैं उसके आगे कराया होता तो आज हमारा लेवल 2 खत्म हो चुका होता, शायद। अगर खत्म नहीं होता तो एटलीस्ट we probably would have been in mid of level 2, but अब वो हम आगे नहीं जा रहे, we are going back, correct? So and again I'm making very clear कि अगर आप लोगों को ये issues है from a timing perspective, from a length perspective, so I would request you to have a conversation with Damini as a batch, because this brings back to the same point जो मैंने discomfort या clarification raise किया था कि if you're saying कि हमें वो repeat करना है, so we'll do that, but then let's not try and ये एक मंथ में कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, एंड सो First thing I want to clear, we are not playing, we won't understand. अरे so playing, don't stick to that word, correct? You know, No, actually yes. So from so what I'm trying to tell you, I need to be, if I'm the driver of this car, I need to be clear what you want. You want speed, or you want that there should not be any jerks during the drive. I wanted to be very clear so that I can drive the car accordingly and being very honest and asking you that. I think we have already chosen that car to give the efficiency rather than speed. Exactly. Now, and then bring this question again कि यार कब खत्म होगा, क्यों नहीं खत्म हो रहा, वो फिर क्वेश्चन कॉन्ट्ररी है ना जो आप लोगों ने चॉइस ली, and that's the reason I'm reacting like this. And that's what I request, because yesterday we have discussed on the point that normal topics with the pace Saturday, Sunday, and the leftover topics or visiting of topics of what KPMG has did will be on weekdays. And Correct. Anybody wants to join weekdays class, it's okay. Otherwise, it will go with the normal pace of on weekends. Correct. डॉट क्लास वही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रहना चाहिए, कर दो सर। So अभी तो उसी में मेरा क्वेश्चन यही है कि तो सैटरडे संडे तो क्लास हो ही रही है फिर। करेक्ट। सो व्हिच मींस कि आपका जो टॉपिक है, जो सुभाष का कंसर्न था कि आप आगे पीछे मत करो, I've tried my best to address that कि जो टॉपिक जिस फ्लो में चल रहा है वो आपका जो भी है न्यू टॉपिक वो सैटरडे संडे चलता रहे। जो आपने पुराना रिपीट करने को बोला केपीएमजी वाला वो आपका वीकडे में आ जाए, ठीक है। एंड
and that's what we agreed. But then bringing this question again, just when we had a discussion yesterday, gives me a little discomfort. That are we on the same school of thought or not, or is still we have a different understanding, or somebody still on not aligned to that goal that we as a team has created. And that's the reason I'm expressing discomfort or reacting like this. My submission means if everybody should come up fairly what they want. सुभाष बताओ, तो टाइमिंग का इशू है, स्पीड का इशू है, क्या है? टाइमिंग की एक्चुअली कैसा मैं ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए, ये काफी टाइम से प्रॉब्लम है, ये इशू रहा। नहीं, how is that relevant? आपको जॉब ज्वाइन करनी है, so nobody is stopping you to join the job, correct? How is that linked to this the completion of this program? उसके वजह से मैं थोड़ा सा और कुछ कर लूंगा। क्यों? एक्चुअली 5-6 महीने 6 महीने का जॉब छोड़ दिया ना, जॉब छोड़ के मैं झारखंड में आ गया, दिल्ली छोड़ के। हाँ, सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा। तो आप वेट कर रहे हो कि ये प्रोग्राम खत्म होगा तब वापस रिज्यूम करेंगे? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस सर, यस सर। नहीं, नो नीड टू वेट दैट. Go out in the market and look for a job. Okay. If you get anything. Okay sir. ठीक है. So do not, और ये सबको बोल रहा हूँ, so अगर कोई इस इंटरप्रिटेशन में बैठा है, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब मैं मार्केट में जॉब सर्च करूंगा और तब तक नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट स्ट्रैटेजी. If you are in the search, you should continue the search, irrespective whether your program is done, whether your program is not. Just one question I have. Putting the disclaimer that speed, and I don't want to know the speed and when it will be reached. We are going to reach at that point of the when we will be starting with the merger. Expected valuation and merger when expected, not. So देखो valuation. आप मान के चलो, सो I think after a month or pretty close towards a month, I think we should start. So valuation is level 2 and merger is between level 2 and level 3. So some part is, in fact merger का एक part हमने level 1 में किया है, थोड़ा उसका जो merger का valuation है वो level 2 में आया है, और मर्जर का जो एक छोटा सा रैप अप पार्ट है वो आपका लेवल 3 में आया है. सो मर्जर जो पीस है वो थोड़ा स्प्रेड आउट है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, सो क्लासिफाई कि कहां पे आप किस कौन से कंपोनेंट पे देखते हैं. जैसे आप लेवल 1 में I'm looking first valuation part and after that the various merger aspects related to this. हाँ, सो मर्जर के 3 पार्ट है, एक हमने लेवल 1 में कर लिया है, दूसरा लेवल 2 में आएगा और तीसरा लेवल 3 में. वैल्यूएशन इज प्रोबब्ली लेवल 2 जो हम स्टार्ट करेंगे. आप लोगों का एक्सेल हो गया करेक्ट, या वो एक्सेल बाकी है अभी? Excel, you are told that for valuation part you align when valuation will come for the valuation part. If from Excel is आपका एक भी सेशन नहीं लिया? नहीं ले चुके हैं. You are taking 4 or 5 sessions. मॉडलिंग वाला बाकी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग. हाँ, मॉडलिंग वाला बाकी है करेक्ट. सो which means लेवल 1 में आपका सिर्फ एक फोरकास्टिंग का टॉपिक बचा है. सो बिकॉज वी ऑप्टेड टू डू रेशियो, इसलिए हमने फोरकास्टिंग छोड़ के रेशियो करा था. फोरकास्टिंग आई विल टेक व्हाट प्रोबेबली 3-4 क्लासेस. ठीक है. सो हाँ, सो प्रोबब्ली आई थिंक towards the end of a month we should be able to start the level 2. This month, it's November. नवंबर नहीं, मुझे आज से 1 महीना लग जाएगा लगभग. Okay. By end of December it will be. Yeah. Plus minus इधर थोड़ा बहुत, but I'm just trying to give an estimation. No. I'm just asking the estimation part. Yeah. Unless you as a batch want me to prepone any topic and do juggling around this, I would suggest no. But if you as a batch want Kinesh को पहले कराओ उसके बाद में कराओ, I am more than happy to do.
Anything else? I have few questions. If you want, Good. okay. I like to know what is stock splits. Stock split. So for example, if I have 100 rupees stock, so it's value of 100 rupees, but I have one stock in my account. Stock split means the company splits this into two parts or three parts depending on whatever split ratio they decide. But let's take they split this into two parts, which means पहले आपके पास 100 रुपीज का एक शेयर था, अब आपके पास 50 रुपीज के दो शेयर हो जाएंगे. इसको स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं. टू कीप इट सिंपल फॉर यू, लेट्स से आपके पास 2000 रुपीज का एक नोट है इंडियन करेंसी का. वो आपके पास एक नोट है बट वैल्यू 2000 रुपीज है. आपने किसी से एक्सचेंज करा, आपके पास 500 रुपीज के 4 नोट्स हो गए, तो ये स्प्लिट हो गया. करेक्ट, ऐसा ही स्टॉक स्प्लिट होता है. तो कंपनी जब मार्केट में ऐसे स्प्लिट करती है तो उससे डिविडेंड कुछ असर पड़ता है? डिविडेंड पे असर पड़ भी सकता है, नहीं पड़ सकता, बट अभी के लिए मान के चलते कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. रीजन बीइंग कंपनी पहले आपको 100 रुपए पे डिविडेंड दे रही थी. 100 रुपए 10% डिविडेंड दे रही थी, तो 100 रुपए पे 10% विल कम आउट टू बी, लेट्स अज्यूम, और वो तो वैसे भी फेस वैल्यू पे होता है, बट लेट्स अज्यूम 100 रुपए पे 10% दे रही थी, तो आपको कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड दे, तो आपके हाथ में टोटल 10 रुपए का डिविडेंड आता था. अब लेट्स अज्यूम कंपनी ने 50-50 के दो शेयर्स कर दिए, कंपनी अभी भी 10% का डिविडेंड देती है, तो आपको पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड आएगा. बट बिकॉज आपके पास दो शेयर्स हैं, तो आपके पास अभी भी 10 रुपए ही आएंगे एज ए क्यूमुलेटिव लेवल. तो अगर आप क्यूमुलेटिव लेवल पर देखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आप पर शेयर पर देखेंगे तो हाँ, 10 रुपए का डिविडेंड डिक्रीज होकर 5 रुपए का होगा. क्वांटिटी बढ़ जाएगी शेयर होल्डर्स के पास. हेलो सर, एक मिनट हो गया फजलूर. हाँ पारुल. Quantity would increase in the hands of shareholders. Yes. Number of shares will go up. Probably your value still remains same. And what is treasury stock method? Treasury stocks क्या होते हैं? So these are ये है आगे. So treasury stock कंपनी के कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो जनरली वो कंपनी मार्केट में ट्रेड नहीं करते, उसको ट्रेजरी स्टॉक्स बोलते हैं, जो मैनेजमेंट या कंपनी अपने पास होल्ड करती है. They do not issue in the market, do not do not prefer to trade those shares into the market. Like private equity types? नहीं, प्राइवेट इक्विटी नहीं होता. So let's assume कंपनी ने 100 शेयर इशू करे, 100 शेयर्स में से कंपनी ने 10 शेयर्स खुद ही खरीद के खुद ही अपने पास रख लिए हैं. ठीक है, अब वो आगे ट्रेड नहीं हो रहे, तो उसको ट्रेजरी स्टॉक्स बोल देते हैं. Okay. ये है आगे, क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक के 2-3 कॉनोटेशंस हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं. जब आप फुल कॉन्टेक्स्ट में वो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा. नेक्स्ट. Qualified and unqualified opinion. Sorry, qualified and Unqualified opinion. opinions. Yes. So for example, if I'm a financial advisor, ठीक है, मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया और उस ओपिनियन में बहुत सारे क्वालिफिकेशन लीगल के बीट्स लगा दिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. So that's a qualified opinion. I'm giving you an opinion. That opinion has a lot of caveats to this. If I'm giving you an open-ended without any caveat, without any cover to this, then I'm giving you an unqualified opinion. Like it's has nothing to do with an expert knowledge. Like a non-expert person can also give a qualified opinion. हाँ, कोई भी दे सकता है. It's up to you whether you want to rely on that or not. It means there are no open-ended questions, and it is. Matlab, in what context it is used? I have picked it from the ratio PPT only. Yeah. So what I'm trying to explain to you, let's assume you go to a doctor, which is an expert, and let's assume there's a treatment. Doctor बोलता है आप 3 महीने में ठीक हो जाओगे अगर आप ऐसा करोगे. So he's giving you an opinion along with the qualified statement. So that's called as qualified opinion. He's telling you, he's giving an opinion that you will feel better in 3 months, provided you do A, B, C.
That's called as qualified opinion. Let's assume case 2. You go to him and say, don't worry, कुछ भी मत करो, 3 महीने में ठीक हो जाओगे अपने आप. This is unqualified opinion. उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई. इक्विटी रिसर्च में करेंगे हम लोग. अच्छा, और अभी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज विल लेवल 2 में आएगा लेवल 2 में. Also in valuation, are we going? एक मिनट. हाँ पर और नहीं, it's done for now. Thank you. ठीक है. हाँ दीपक. So in valuation, we will do the valuation for merger part also. When we are merging equity and swap ratios and all that. जब वैल्यूएशन में पहुंचेंगे तब देखेंगे. इनफैक्ट नॉट वैल्यूएशन, जब मॉडलिंग करेंगे तब भी एक बार डिस्कस करेंगे. तो देन लेट्स सी किस तरह का केस या क्या हम पिक करना चाहते हैं. we'll discuss that when we reach to that stage. फजलुर तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, वो स्टॉक स्प्लिट के बारे में बोल रहा था. हो गया क्लियर? ठीक है. Anything else guys? On week and what topic we are, I think this ratios are over. Yeah, we'll start with the forecasting. So as we discussed yesterday, so now your weekend will continue to have new topics, and your weekdays sessions will continue to have those old topics which you have got an approval from Damni to repeat. And this is an optional session. Anybody wants to attend, not attend, it's your choice. Weekday is your optional session. So what will be the next topic? For what? weekend class के लिए. बताया ना फोरकास्टिंग. इस सैटरडे को फोरकास्टिंग करेंगे हम. कंसोलिडेशन नहीं होगा सर? कंसोलिडेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस नहीं. हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे. Okay, thank you. ठीक है, चलिए. थैंक्स. विल कनेक्ट ऑन सैटरडे. थैंक्स, बाय.